Okay, good evening everyone once again. And now the recording has started so that you can put your attendance in the chat box. So let me read the attendance. Aidur is there, Priya is there, Anand, and who else? Vivek, and I guess one more student must be there. Harsuk, you want to put your attendance? Okay, so this is the ongoing chapter, algebraic expressions and identities. So we have seen what is monomial, what is binomial, what is trinomial, right? We have also seen what is expression, and now, and I believe we have seen operations performed on monomial, right? So now what we are going to do is we are going to see multiplying a monomial by a trinomial. Okay, now what we are going to do, we are going to multiply a monomial by a trinomial. So let's take an example here. So see, 3p is our monomial and 4p square plus 5p plus 7 is our trinomial. So we have to multiply it. So I guess we have seen how to multiply a monomial with a binomial, right? So similarly, we have to perform this as well. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 3p को first of all we have to multiply with 4p square, right? So it has written here. Again, plus का symbol देके हमें we have to multiply 3p with 5p, which is written here. And lastly, we have to multiply 3p and 7, which is written here. Now, 3p into 4p square is 12p cube. Plus symbol will be as it is. And 3p into 5p is 15p square. And lastly, we have 3p into 7, that is 21p. So this is how we multiply a monomial with a trinomial. Okay. Any doubts, question? Any doubts or questions? I believe you must not be having any doubt. Okay, so let's try to solve few examples. So I will solve the first one. I'm sorry for this extra lining because I'm using this writing pad after a very long period, so it's happening. Please bear with it. Okay, now see. Okay, it's now just a minute. It's too much of a problem. Let me fix it. Just a second. Okay, now it will not trouble us. Yeah, now see, what we have to do is we have to calculate this for x is equals to 1. So we have to just put value of x is equals to 1 in this expression, and then we can get a numeric value. So 1 into 1 minus 3 plus 2 now is equals to x square minus 3x plus 2. अभी ये कहाँ से आया? So ये कहाँ से आया? Because we have multiplied this x with this bracket. So x into x is x square, x into minus 3x is minus 3x, and plus 2 is as it is. So in this expression, we have to put x is equals to 1. So 1 square minus 3 into 1 plus 2. So 1 minus 3 plus 2, मतलब ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा, and this minus 3, that means 3 minus 3 is 0. So इस expression की value for x is equals to 1 is 0. मतलब x is equals to 1 अगर हम रखेंगे तो this expression will become 0. Okay, that is done. Now take the next one. Okay, we will see the subtraction now. We have seen enough examples of addition. Now we'll see subtraction. So this is our polynomial. I would say this is a polynomial, and this is again a, actually this is a binomial. But since if the expression is having more than one terms, then we can call it as polynomial as well, right? We can call it as binomial as well as polynomial. So 3pq into p minus q from, अभी हमें ये subtract करना है, 3pq into p minus q from 2pq in bracket p plus q. Okay, so first of all, what we will do is we will simplify this. We cannot add and subtract like this, है ना? हमें इसको थोड़ा सा simplify करना पड़ेगा so that we get similar terms and we can put
एक के नीचे दूसरा रख सकते हैं, वी कैन परफॉर्म द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन operations. Okay, so if we have to simplify the first one, 3pq into p minus q. So इस 3pq को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो this will become p square. So 3p square q, 3p square q minus का सिंबल as it is रहेगा. Now 3pq into q is 3pq square. ठीक है, तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हुआ. सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर द सेकंड वन एज वेल. सो दोनों भी अभी थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहे हैं, isn't it? यहाँ पे भी पी स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है, राइट? सो एक के नीचे एक हम रखेंगे. नो, सिंस दिस इज अ सब्ट्रैक्शन, अभी एडिशन की जब हम बात करते हैं तो ऑर्डर डजंट मैटर. मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आप नीचे लिख सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन आप ऊपर लिख सकते हो, बिकॉज द रिजल्ट इज सेम, isn't it? 5 में 3 ऐड किया या फिर 3 में 5 ऐड किया, आंसर तो 8 ही आने वाला है, which is not the case with subtraction. So order matters here, right? So how you will identify the order? तो यहाँ पे clearly बोला गया है कि subtract this from that. इसमें से इसको subtract करना है. So it is must to have this term first. ये वाला जो टर्म है ये पहले हमें लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, ओनली साइन विल बी चेंज्ड, isn't it? मतलब कि अगर 5 में से 3 अगर हमें सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, सो आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन अगर हमने 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 2 ही आएगा, लेकिन दैट विल बी -2 और -2, isn't it? सो विच इज अ रॉन्ग आंसर. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये टर्म लिख दी जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एंड in the second place I have written the term which is to be subtracted, isn't it? So I believe you all of you know that when we perform subtraction of these kind of expressions we have to do the sign change. ठीक है, सो जहां पे प्लस है उसे माइनस कर दो, एंड जहां पे माइनस है यू हैव टू राइट प्लस देयर, राइट? सो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, सो 2pq स्क्वायर प्लस 3pq स्क्वायर हो गया अभी ये. आफ्टर साइन चेंज दिस बिकम्स प्लस. सो 2 प्लस 3 इज 5 pq स्क्वायर. और यहाँ पे अगर हम बात करें सो ये पहले पॉजिटिव था, सो दिस बिकम्स नेगेटिव. एंड अगर 2p स्क्वायर q से -3p स्क्वायर q ऐड करें हम, ठीक है, 2p स्क्वायर q में -3p स्क्वायर q ऐड करेंगे, सो द रिजल्ट विल बी -p स्क्वायर q, isn't it? So this is how we do it. Any doubts? I believe there should not be any doubts. Any doubts, students? सब्ट्रैक्शन में कैसे करना है या फिर सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, या फिर कौन सा टर्म पहले होना चाहिए, कौन सा टर्म सेकंड होना चाहिए? नो डाउट्स. थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन. Okay, so if you see in this first example, exercise 9.3, carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs. So यहाँ पे 5 examples दिए हैं. Let's take 2 of them, any 2 of them. I will solve one of them, and the other one you will solve, right? So I want you to multiply. Let's take a simple one. This is simple one. Third one. So try this and tell me the answer in the chat box. I know you can type the answer in the chat box, isn't it? You can definitely type the answer in the chat box. Okay, so do it quickly and put the answer in the chat box. I hope all of you have your notebook and pen with you and you are doing the calculation, right? I need answer from every one of you. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 students here, so I need 5 answers. And please don't copy answer from others, okay? Don't copy answer from the chat box and paste it there. Okay, so I got 2 answers, and which seems to be not copied. So 7a cube b square plus 7a square b cube. Okay.
एनी अदर आंसर इन दो आंसर्स के अलावा कोई? ओके, अगेन सेम, ठीक है। किसी का इस आंसर को छोड़ के कोई दूसरा आंसर आ रहा है? नहीं आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यू टेल मी विच वन शुड आई सॉल्व? मैं कौन सा सॉल्व करूं अभी? इस पार्ट में से कौन सा सॉल्व करना है? टेल मी। फिफ्थ वन करूं? इट सीम्स टू बी वेरी हार्ड, इजंट इट? I have to multiply a term with zero. It seems to be very hard, isn't it? Or is it simple? Yeah, the answer is going to be zero only. We don't have to do calculation as well, isn't it? Okay, let's drop that. Fifth का answer zero आएगा. Let's drop that. Which one should I do? Fourth one? I think I should do fourth one. Okay. So see, यहाँ पे मुझे a square minus 9 को मल्टीप्लाई करना है 4a के साथ में. So what I will do is I will multiply this 4a with a square first. So 4a into a square is 4a cube. माइनस का सिंबल एज इट इज रहेगा एंड 9 into 4 is 36a. So my answer is 4a cube minus 36a. आप सभी का आंसर यही आएगा? ओके, ठीक है, मतलब मेरा आंसर भी सही है. ओके, सो कंप्लीट द टेबल. फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है एंड वी हैव टू राइट द प्रोडक्ट हियर. It is again same. The only difference is some of them are trinomials, some of them are binomials, and some of them are monomials, right? So there is no fixed pattern here. So you can do it, and I think we have done this one. Fourth one जो है वो already हमने अभी अभी किया है. So there should not be any issue with it. Okay. So the third one seems to be quite difficult. Fourth one is also not that difficult. All right. So in the third one, I believe we should take one of them, one example at least. Okay, so let's take which one? Fourth one. I think fourth one should be taken. So see यहाँ पे क्या करना है हमें? X into x square into x cube into x raised to 4. So कैसे करेंगे हम? ये सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में. ओके, x के सारे टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन. सो जब कोई भी टर्म मल्टीप्लीकेशन में होती है, सो उसका जो पावर होती है उसका क्या होता है? क्या होता है? एडिशन होता है, राइट? या सो x into x square into x cube into x raised to 4 is nothing but x raised to 10, adding the powers, correct? ओके, तो ठीक है, बाकी सारे एग्जांपल्स तो आई थिंक यू कैन डू इट. मुझे इसमें से कोई भी इतना मुश्किल एग्जांपल लग नहीं रहा है, ठीक है? ओके, लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लाइंग ए पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल. तो अब तक हमने क्या किया? वी वर मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल विथ बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. तो अभी क्या करना है? नाउ आवर बोथ द टर्म्स, और if there are more than two terms, so all of the terms are going to be polynomial and not monomial. ठीक है? तो polynomial मतलब भी binomial भी हो सकता है, trinomial भी हो सकता है, और it may have more than three terms. Okay, so see, let's multiply one binomial by another binomial. So this is the first one and this is the second one. So how do we do this? देखो सिमिलर प्रोसेस है. हम क्या करते थे अभी? लेट्स कंसिडर दिस एज अ मोनोमियल फॉर अ सेकंड. ठीक है, ऑल्दो दिस इज अ बाइनोमियल, बट लेट्स कंसिडर दिस एज अ मोनोमियल. तो मोनोमियल में हम क्या करते थे? वी यूज्ड टू मल्टीप्लाई दिस मोनोमियल फर्स्टली विद दिस, देन प्लस सिंबल एंड देन विद दिस. यही करते थे. तो अभी नाउ लेट्स कम बैक टू आवर सिनेरियो, बोथ आर मोनोमियल्स. तो इसमें क्या करना है? सिमिलरली ये वाला जो टर्म है इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है वन बाय वन. तो पहले इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. 3a विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस वन,
प्लस देके हम 4b मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस होल टर्म. Okay, so see, 3a into 2a plus 3b plus 4b into 2a plus 3b. So यहाँ पे again, now ये वाले एग्जांपल तो हमने सॉल्व किए ही है. Again, this example has begun or this example has become monomial multiplied with polynomial. So you know how to solve it because we have just seen it, right? So इसमें भी अगर हमें फिर से split करना पड़ेगा. 3a should be multiplied with 2b, sorry 2a, and 3a should be multiplied with 2b. Here it is, here it is. And for the second term also, same करोगे आप. Now 3a into 2a is 6a square. 3a into 3b is 9ab. 4b into 2a is 8ba or 8ab. And the last term is 4b into 3b is 12b square. So you can add these two terms, AB, BA, same EA, right? 8AB plus 9AB, that is going to be 17AB. So this is what the final answer will look like. So, but when we carry out term by term multiplication, we expect 2 into 2, 4 terms to be present, but two of these are like terms which are combined, and hence we get three terms. So in multiplication of polynomials with polynomials, we should always look for like terms if any and combine them. तो क्या हमें करना है? So before writing a final answer, we have to make sure that there are like terms and we either add them or subtract them. तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में अगर आपको एग्जांपल आता है एंड इफ यू राइट दिस आंसर, सो दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर. ऑल्दो दिस इज नॉट इनकरेक्ट आंसर, ये गलत नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट भी नहीं है बिकॉज यू हैव नॉट कंबाइंड दीज टू टर्म्स. दीज आर सिमिलर टर्म्स, सो इट शुड नॉट बी रिटन ट्वाइस. यहाँ पे दो बार लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन कंबाइन देम एंड यू कैन राइट इट हियर. मतलब 9ab प्लस 8ab आप ऐसे नहीं लिखोगे, यू विल ऐड देम एंड यू विल राइट 17ab. ठीक है. सो इससे आप क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट तो पहले भी था, अभी भी रहेगा, बट इट विल बी सिंपलर. मतलब देखने के लिए वो थोड़ा सा सिंपल लगेगा, उसमें से टर्म्स कम हो जाएंगे, 4 की जगह 3 टर्म्स दिखने लग जाएंगे. ओके, सो लेट्स डू दिस वन. ठीक है, अभी मैंने आंसर छुपा दिया है. सॉल्व दिस वन. यू विल सॉल्व इट एंड टेल, यू विल टेल मी द आंसर. A plus 7 is first polynomial, and the second one is B minus 5. Can you write your answers quickly? I hope all of you are solving the example. Okay, somebody has got the answer. AB plus 2 minus 35. थोड़ा सा गलत हुआ. Okay, AB minus 5A plus 7B minus 35. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर यही आ रहा है. दैट मीन्स दिस हैज टू बी द करेक्ट वन. सब ज्यादातर लोगों का यही आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि करेक्ट ही होगा, बट सिंस इट इज करेक्ट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यही आंसर करेक्ट है. ओके, somebody has written AB plus 2AB. नो, 2AB नहीं आएगा दो बार. AB plus 7B लेट्स डू इट. ठीक है, यहाँ पे कर दइए हम. सो सी, A into B minus 5 plus 7 into B minus 5. So AB minus 5A, ठीक है, प्लस 7B माइनस 35. तो AB माइनस 5A प्लस
7b - 35 इज द करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है। आई गेस योर नेम इज विवेक। विवेक, आर यू कंफ्यूज्ड अबाउट दिस? आपने आंसर गलत लिखा है, ab+2ab - 35 लिखा है ना, सो विच इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। अगर डाउट हो तो बताओ। ठीक है। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल। नाउ इफ यू सी द पैटर्न, सबसे पहले हमने शुरू किया था मल्टीप्लाइंग मोनोमियल विद मोनोमियल, फिर हमने मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई किया, फिर हमने मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का लेवल है दैट इज इंक्रीजिंग, थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है, राइट। देन वी मल्टीप्लाइड बाइनोमियल विद बाइनोमियल। अभी हम बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करना है? सिमिलर, देयर इज नो डिफरेंस। ये दो ये दो पॉलिनोमियल्स यहाँ पे दिए हैं। ओके, तो पहले ए को हमें इस पूरे ट्राइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करना है, देन इस 7 को हमें इस पूरे ट्राइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करना है। नाउ a into a square is a cube, a into 3a is 3a square, a into 5 is 5a। हो गया ये। उसके बाद में 7 into a square is a square, 7a square, plus 7 into 3a is 21a, and 7 into 5 is 35, that means a cube plus 3a square plus 5a plus 7a square plus 21a plus 35। तो ये टर्म्स हमें मिलेंगे। नाउ दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, वी अगेन हैव टू फाइंड आउट सिमिलर टर्म्स। तो यहाँ पे चार टर्म्स है जो कि थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहे हैं। विच आर दोस? फर्स्ट वन इज 3a square and 7a square, second one is 5a and 21a। okay, so combine करो इनको। so if you write it like this, this becomes 7a square plus 3a square is 10a square, and 5a plus 21a is 26a। So this is the final answer. Pretty simple, isn't it? Confusion की कोई बात ही नहीं है इसमें। Just go step by step. Do not miss any step or do not try to take any shortcut. ठीक है, shortcut लेना नहीं है। You have to write all the steps. You have to do it slowly, one by one, isn't it? So this is how we do it. Okay, so now exercise 9.4 में फ्रॉम ईच ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस में से हम एक एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में है सिक्स क्वेश्चन, सॉरी, सेकंड में है 4 एंड थर्ड में है 7 क्वेश्चंस। तो बताओ फर्स्ट में से कौन सा लेना है स्टूडेंट्स? विच वन शुड आई टेक फ्रॉम द फर्स्ट वन? मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। कौन सा लूं मैं फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में से? एक्सरसाइज 9.4 में से जो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, उसमें विच क्वेश्चन शुड आई टेक? सिक्स्थ वन। ऑल ऑफ यू, ठीक है, सिक्स्थ वन लेना है बिकॉज वो थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है, बट विच इज नॉट द केस, वो हार्ड नहीं है, बिलीव मी। ओके ठीक है, चलो सिक्स्थ वन लेते हैं। तो इस पे क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें सी पहले 3/4 ए स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। वेट, देयर इज अ कैच। सी यहाँ पे 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस। ठीक है, तो क्या होगा ये? 3/4 a square is going to be multiplied with 4a square minus 8/3 b square। now कैसे? ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 4 इंटू 2 इज 8 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय 3 b स्क्वायर इज एज इट इज। तो पहली टर्म ये हुई। बाद में प्लस का सिंबल देके हमें लिखना है 3b स्क्वायर। सिमिलरली दिस टर्म 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर। करेक्ट, यहां तक समझ में आया? हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया।
Easy or not? Okay, somebody has found out the answer as also, but let's wait for it. Okay, समझ में आया, ठीक है. Now let's take next steps. So see here, अभी इस 3/4 a² को हमें इस 4a² के साथ में मल्टीप्लाई करना है, which means ये 4 will be cancelled out with this 4. मैं कुछ अलग मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है. ये 4 कैंसिल हो जाएगा इस 4 से, सो 3a² इंटू a² हो जाएगा 3a⁴, राइट. नाउ मल्टीप्लाई दिस होल टर्म विद दिस, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ में, ये 4 हो जाएगा इसके साथ कैंसिल, ये रहेगा 2. नो माइनस 2a² b². तो ये पहली टर्म जो हमने सिंप्लीफाई की, ये इस तरीके से दिखेगी 3a³ सॉरी 3a⁴ माइनस 2a² b². ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई द सेकंड टर्म. तो यहाँ पे 3b² को हमें 4a² से मल्टीप्लाई करना है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज प्लस 3 into 4 is 12 a² b². Okay, now again this 3 will get cancelled with this 3, and it is going to be minus 8b⁴. तो इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो इट इज गोइंग टू बी फाइनली 3a⁴ प्लस 10a² b² माइनस 8b⁴. ठीक है, सही है गलत है? सही है, आप सब लोग सॉल्व कर रहे हो, समझ रहे हो स्टेप बाय स्टेप? कहीं पे भी डाउट है? यस, नो, नो डाउट. ओके, तो सबका आंसर यही आ रहा है. ओके, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन. ठीक है, सो लेट्स रब इट ऑफ. इसको मैं डिलीट कर देता हूं. वेट, द सिस्टम ऑप्शंस हैव बीन चेंज्ड आई गेस. ओके, या सो दैट इज डन. पहला क्वेश्चन तो हो गया. नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन में भी कौन सा क्वेश्चन करना है? थर्ड वन. लेट्स टेक थर्ड वन. ठीक है, फोर्थ वन आप कर लेना, बिकॉज इट इज हार्ड एंड आई डोंट वांट टू डू हार्ड क्वेश्चंस. ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड वन जो है उसमें a² प्लस b इंटू a प्लस b² लिखा है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज a² मल्टीप्लाइड विथ a प्लस b² और प्लस b इंटू a प्लस b². तो मतलब इस a² को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया विच इज हियर, इस b को मैंने इसके साथ में मल्टीप्लाई किया विच इज रिटन हियर. ठीक है, सो a² इंटू a इज a³ प्लस a² b², b into a is ba or ab, and lastly we have b³. ठीक है, तो इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, कुछ रिड्यूस हो सकता है, अभी इसमें नहीं हो सकता. Isn't it? So this has to be the final answer. a³ plus a² b² plus ab plus b³. Very good, Aida. Very good. This is the correct answer. मैं समझता हूँ कि बाकी लोग भी कर रहे हैं. ठीक है, आर यू डूइंग इट? प्लीज प्लीज पुट योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू. जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे वो आपको भी लिखना है. राइट, यू हैव टू राइट इट ईच एंड एवरी स्टेप. अगर नहीं समझ में आता है स्टेप तो बताना है, सर दिस स्टेप आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. ओके, ठीक है. सो आई बिलीव कि इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट नहीं है. ओके, लेट्स टेक द थर्ड वन.
सो थर्ड वन में कौन सा सॉल्व करे? विच वन शुड वी सॉल्व? यू पीपल टेल मी. एंड बाकी सारे जो क्वेश्चंस बच रहे हैं, यू हैव टू सॉल्व देम एज योर होमवर्क. ठीक है, तभी आपको ये इसकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज यू विल फॉरगेट इट. भूल जाओगे आप लोग. ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू सोल्व देम एट होम. And if you face any difficulty or have doubt, you can ask me in the next class. Isn't it? Okay. So नहीं लेना है, तीसरे में से कोई क्वेश्चन नहीं लेना है. Why are you so silent? लिखो, चैट बॉक्स में लिखो. Are you able to type? Okay. Okay. So let's take the final one. ठीक है, जो लास्ट में है वो क्वेश्चन हम लेते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मल्टीप्लाई ए ट्राइनोमियल विथ ए ट्राइनोमियल. ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर लिखना ही शुरू कर देता हूँ without writing the question because question is already there. So let's start writing the answer. Okay, so here I took the pen and a into, इसको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लगेगा. ओके, सो a into a plus b plus c. नाउ प्लस करेंगे b into a plus, सॉरी इट शुड नॉट बी प्लस, इट शुड बी माइनस. आप बताते हुए नहीं है. ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में माइनस है ना, तो किसी ने नहीं बताया या फिर किसी ने नोटिस ही नहीं किया. ओके, a प्लस बी माइनस सी, और लास्टली c इंटू ए प्लस बी माइनस सी. ठीक है, तो a इंटू ए इज ए स्क्वायर, a इंटू बी इज ए बी, a इंटू सी इज माइनस ए सी. ये हुआ पहले का. सेकेंड में अगर हम बात करें तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, और तीसरे का अगर हम बात करें तो ए सी, नॉट ए बी, ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर. ठीक है, तो अब इसमें सिमिलर टर्म्स अगर आपको कुछ दिख रहे हैं तो बताओ मुझे जरा. सिमिलर टर्म्स कोई दिख रहा है आपको जो कि हम ऐड कर सकते हैं? तो देखो, ये है, ये दिस बोथ आर ए बी, इजंट इट? ये भी ए बी, ए बी, ए बी, ए सी, ए सी, बी सी, बी सी, राइट. तो ये ए सी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में बिकॉज दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. ये बी सी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में, और यहाँ पे जो ए बी है विच विल नॉट कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा. करेक्ट. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square minus c square. So this is the final answer. Okay, either ab नहीं कैंसिल होगा ना, और b स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा. हाँ बराबर, isn't it? b स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा. ठीक है, चलो. So that is done for this practice set. Now next topic that we have is, okay, let me just see how much this chapter is remaining. ठीक है, तो 2 पॉइंट और एक 9.5. ऑलराइट, सो आई बिलीव कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए. लेट्स सी व्हाट इज एन आइडेंटिटी. नो, कंसीडर द इक्वालिटी. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन लिखा है विच इज आल्सो इक्वल टू राइट साइड, सो वी शैल इवैल्यूएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वालिटी फॉर सम वैल्यू से a. तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो
we will get some value of a. So for a is equals to 10, मान लीजिए a की वैल्यू 10 है, सो इन दैट केस LHS या फिर लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 132 एंड द कैलकुलेशन इज रिटर्न हो रही है। ठीक है, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कि a की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं सो लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है वो 132 होती है। सिमिलरली if you put a is equals to 10 in right side, it is again 132. Thus the values of two sides of the equality are equal for a is equals to 10. तो अगर a is equals to आप -5 भी लोगे तो भी दोनों साइड की वैल्यू सेम ही आएगी। सो वी शुड फाइंड दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ a, मतलब कोई भी वैल्यू के लिए LHS is equals to RHS ही आएगा। So in this case what we can say is such an equality true for every value of the variable in it is called an identity. समझ रहे हो, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन अगर ऐसा हो जिसमें कि लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू, अगर हम उसका जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं दोनों साइड में एंड दोनों साइड की वैल्यू अगर इक्वल आती है सो सच एक्सप्रेशंस विल बी कॉल्ड एज आइडेंटिटी। सो जो हमें एग्जांपल दिया है दिस इज एन आइडेंटिटी। व्हाई दिस इज एन आइडेंटिटी? बिकॉज इफ वी पुट एनी वैल्यू ऑफ a ऑन बोथ द साइड्स सो the value of both sides is not going to be different, it is going to be same. So an equation is true for only certain values of the variable in it, it's not true for all the values of the variable. For example consider this, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे so a square plus 3a plus 2 is equals to 132 दिया है। It is not, it is true for a is equals to 10 as seen above, but it is not true for a is equals to -5 or a is equals to 0. So this is not the identity, ये आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, ऑल्दो आप बोलोगे कि सर अगर हम लेफ्ट साइड में a की वैल्यू 10 रखते हो तो लेफ्ट साइड की वैल्यू 132 ही आएगी और राइट साइड की वैल्यू तो 132 है ही, बट दैट इज नॉट द केस, क्योंकि राइट साइड में देयर इज नो वेरिएबल, और अगर वेरिएबल नहीं है दैट मींस द टर्म इज कांस्टेंट, एंड इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड सो द वैल्यू इट विल नॉट बी इक्वल एक्सप्रेशन, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं रहेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, तो इक्वालिटी क्या है समझ में आया, सॉरी आइडेंटिटी क्या है समझ में आया? यस, ओके, thank you for your quick response. Now the next topic that we have is standard identities. तो क्या होती है standard identities? So let us first consider the product. तो ये सब you are in 8th standard right now, okay? और ये जो आइडेंटिटीज आपको दी गई है बेसिक आइडेंटिटीज, दीज आर वेरी हेल्पफुल गोइंग फर्दर, मतलब जब आप 9th में 10th में जाओगे या फिर उसके बाद में जाओगे ना, सो ये आपको बहुत काम आने वाली है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट आइडेंटिटी दी है हमें standard identity, first standard identity, so let's not get into the maths and calculation, you can simply write down this, ये लिख दो और इसको रट दो, मतलब आपको ये याद ही होना चाहिए, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, इसको लिख दो और इसको याद कर लो, रिमेंबर इट। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड आइडेंटिटी जो है यहाँ पे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रिमेंबर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो हो सकता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर हो, विच इज नॉट द केस, माइनस बी स्क्वायर नहीं है, इट इज प्लस बी स्क्वायर, माइनस सिर्फ 2ab में है। ओके, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, मतलब ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, ये तो कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, एंड द लास्ट वन, लास्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी इज इन वन ब्रैकेट a प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी, तो अगर ऐसा है सो वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपको इसको प्रूफ करना है ना तो आप जो लेफ्ट साइड का ये लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई बाइनोमियल विद बाइनोमियल, दैट्स नॉट अ बिग डील, इजंट इट? तो इसको मल्टीप्लाई करो
और देखो कि वो राइट साइड की वैल्यू की जितना ही आता है कि नहीं आता है. Okay, so these are the three identities. First identity is a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Second one is a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. And third one is in one bracket a plus b, in one bracket a minus b. दोनों का अगर multiplication है, so its value is going to be equal to a square minus b square. Sorry for that disturbance. Okay, so is there one more identity? Okay, so see, this one is again one more identity. You can write it down, but I don't think this will be used mostly. But आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी, so you can write it and you can remember it. Now applying identities. अभी हमने identities तो सीख ली, उसमें हमने ये नहीं देखा कि उसका प्रूफ क्या है या फिर, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा. Okay, what you have to do is you have to solve calculations or solve numericals based on it. तो मान लीजिए कि ये वाला कैलकुलेशन है, ये वाला कैलकुलेशन आपको फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है. तो अगर आप कन्वेंशनल वे से जाते तो क्या करते हैं, what you would do is, see यहाँ पे a is 2x, b is 3y और ब्रैकेट का स्क्वायर है. तो अगर आप कन्वेंशनल वे से जाओगे तो आप क्या करोगे, 2x plus 3y into 2x plus 3y. स्क्वायर है मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर से 2x को 2x plus 3y से मल्टीप्लाई करेगा और 3y को 2x plus 3y से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें से सेम टर्म आपको कंबाइन करने पड़ेंगे, विच इज गोइंग टू बी अ लेंथी प्रोसेस, अ बिट लेंथी. ठीक है, सो दिस lengthy process can be cut short by using the identity. So which identity do we have? A plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. तो a क्या है यहाँ पे, 2x है, b है 3y. so लिखो, see a square is 2x square. तो अभी इसमें जब आप स्क्वायर कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. मतलब आप इस 2 को बाहर नहीं छोड़ सकते कि सिर्फ x का स्क्वायर करेंगे, 2 का नहीं करेंगे, 2 का भी करना पड़ेगा, बिकॉज 2x इज योर a, ओनली x इज नॉट योर a. ठीक है, सिमिलरली जब आप 3y का भी स्क्वायर करोगे तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, लाइक 3 का स्क्वायर होगा 9 और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर. isn't it? So a square plus 2ab plus b square. तो 2x square is 4x square, 2x whole square is 4x square plus 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, to 12xy, and lastly we have 9y square. मतलब बहुत सिंपल हो गया, right? Since we use the identity, ये सिंपल हो गया. Okay, so this is how you have to use identities and just put the correct values. Make sure that you take both values. तो अगर आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप ध्यान देके सॉल्व करोगे, सो देयर इज नो स्कोप फॉर द कंफ्यूजन और द रॉन्ग आंसर. ठीक है, अगर आप जंप करने की कोशिश करोगे, शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे, सो देन यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स. डोंट डू दैट. ठीक है, so I don't think there's anything else remaining in this chapter that we have not seen. हमने सब कुछ देख लिया इस चैप्टर में. सो प्रैक्टिस सेट 9.5 which is also the last practice set of this chapter. You are going to do this as your homework. I know this is quite big, but yeah, more the practice you are going to have, you will be more prepared for the exam nonetheless. Okay, so with that, our this chapter also ends, and I'll see you in the next class with a new chapter. So please solve each and every example. Please solve all the examples, and if you find any difficulty in any of the examples, you can ask me in the next class, because this chapter I personally feel is very important for you, for your basics. ठीक है, तो आपके जो ये आइडेंटिटीज है या फिर जो मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मोनोमियल का, पॉलिनोमियल का, इवन तो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आई बिलीव. ठीक है, सो डू इट thoroughly, and if you have any questions, please come up with your questions in the next class. So I believe in today's class you don't have any questions, so today's class has ended. I'll see you on the next maybe Wednesday. So till then, take care and keep studying. Bye bye.
You are free to leave the class. Bye. Harsuk, the class has ended. You can leave the class now.